Good evening, Ajay sir. Am I audible to you? Yeah, ma'am. Good evening. You're audible. Thank you. Ma'am, I want to share the PPT once. Can you please tell me if it is visible or not? I'll just share it. Sure, sir, sure.
So it was visible initially, then there was a black screen. Ma'am, I was sharing, could you see that PPT once? Sir, I was not able to see it right now, Okay. but previously when you shared, then I was able to see it. Acha, you were able to see, no? Yes, sir. Previously, Okay, I was okay. able to see. Yes, sir. Okay, I'll just share it once and see. Okay, sir. Can you see it now, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. It is visible. Okay, okay, ma'am. I'm all ready from here. Once you are all ready, then we can start. Sure, sir. Sir, we'll wait like till 3 o'clock. Sure, no problem. Sure, sir.
Good afternoon, everyone. Since we are seeing participants are still joining, so we'll wait for another 5 minutes. So from sharp 3:05, we'll start our presentation and the informative session. Thank you.
Good afternoon, everyone. On behalf of NCDX, I, Tanushri Rana, Senior Executive, welcome you all on this informative session on Introduction to Commodity Derivatives. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ कि इवन ड्यूरिंग मार्केट टाइम आप कनेक्टेड हैं इस वेबिनार में कमोडिटी डेरिवेटिव्स के बारे में समझने के लिए. एंड बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर स्पीकर मिस्टर अजय कुमार सेठी जी, जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं सेबी में, और वो आपको बेसिक्स ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में बताएंगे कि कैसे इन्हें उपयोग में लाया जा सकता है रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, और कैसे इन्वेस्टमेंट के बास्केट को डाइवर्सिफाई करने के लिए कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट आपके लिए उपयोगी रहेंगे. मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स का कि पूरे वेबिनार के दौरान उनका कोई भी प्रश्न होता है तो वेबिनार के अंत में चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को लिखिए, और एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल इंश्योर दैट आपके क्वेश्चन सारे आंसर हों. एंड टुडेज वेबिनार विल बी बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, ताकि जो हमारे डिफरेंट सेट्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं उनको वेबिनार का एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिले. Now I would request Sir Ajay sir to please start on with the presentation. Yeah, good afternoon, everybody. Namaskar. This is Ajay Sethi from SEBI. So I'll just share my PPT with you all. Everybody able to see the PPT? Start कर सकता हूँ? जी सर. Okay, thank you ma'am. Yeah, good afternoon everybody. तो आज का जो presentation है, the presentation will be covered in both English and Hindi, ताकि हमारे सभी वर्गों के लोगों के लिए ये एक महत्वपूर्ण सूचना की तरह रहे. तो I will be starting the presentation. So it will be on Indian commodity derivative market. So this will be the flow of presentation. First of all, I will be talking about regulatory framework. तो हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा है, कौन कौन प्लेयर्स है उसमें, पार्टिसिपेंट्स हैं. देन आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट. मार्केट में क्या है, व्हाट द मार्केट कंप्राइजेस ऑफ.
Then I'll be talking about benefits of commodity derivative trading. Commodity derivative trading के benefits क्या क्या होंगे? After that, I'll be covering products. क्या क्या product available रहेंगे commodity derivative market में? After that, SEBI के क्या क्या initiatives रहे हैं? What are the initiatives taken by SEBI for promoting, developing commodity derivative marketing? And last में, how to do safe investing. आप safe investing कैसे कर पाएंगे? So going with the flow, actually there is some problem with the PPT. Please bear with me. Some visuals are not coming properly. तो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में अगर मैं बात करूं तो हमारे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में मेजरली 4 रेगुलेटर्स हैं. सेबी, जैसे कि आप सब जानते हैं, इट इज कमोडिटी एंड इक्विटी मार्केट रेगुलेटर. इन बैंकिंग, जैसे कि आप सबको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज द प्राइमरी रेगुलेटर. इन इंश्योरेंस, इडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. एंड पेंशन में अगर मैं बात करूंगा, देन इट इज पीएफआरडीए. So these are the 4 major financial market regulators. Going forward, there was a landmark merger that happened between SEBI and FMC in September 2015. After that, SEBI took over the commodity derivative market operations under it, and then we have formulated various policies, regulations, circulars after there in September 2015. Going forward, this is a regulatory framework which SEBI comes under, and under SEBI there is stock exchanges like MCX, NCDEX, NAM is from NCDEX, and clearing corporations are also there. So if I talk about SEBI, there are 3 mandates of SEBI that I'll be talking about. Here it is not visible. I don't know what is the problem. Please, I'm sorry about it. तो पहला जो है वो है that is protecting the interest of the investors. So first mandate, key mandate of SEBI is in protecting the interest of the investors. Like हम लोग facilitate करते हैं various complaint redressal system, जैसे कि हमारा scores है through which complaint have been redressed. Then we build capacity of investors through awareness to help them take informed decision. हम एक अवेयरनेस मॉड्यूल, जैसे कि अभी चल रहा है, ऐसा सब प्रोग्राम्स रखेंगे ताकि आप इन्वेस्टर्स एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके. Ensuring safety in marketplace also. So all this comes under the protection of interest of investors. Moving forward, the second mandate will be regulating the securities market. So we form various regulation and circulars from time to time to regulate the securities market. These circulars depends upon the necessity of the market. Market को कैसा चाहिए, क्या हो सकता है, या कुछ हम लोग को कर्व करना है, या हम लोग को कुछ डेवलप करना है. तो various regulation and circulars have been framed from time to time. So this is how the market has been regulated. Third mandate अगर मैं बात करूं, that is the promoting the development of securities market. So various new products have been launched, options in goods like this was another product, futures, options. These are various products in commodity derivative market which are being launched to develop the securities from commodity market from time to time. Also, mutual fund category 3 AIF participations have also been encouraged and allowed to develop the securities market. So moving forward, commodity derivative market, if I tell you about, 91 notified commodities of central government has been notified under commodity trading. About 41 commodities are being traded. Investors may start undertaking by taking the following steps. आप trading start कर सकते हैं. See, these are some of the basic steps. आप एक broker opening trading account खोल सकते हैं किसी भी SEBI registered broker के साथ. KYC और proper disclosure document पढ़ के आप पहले इनिशियल एक मार्जिन होता है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा फॉर ट्रेडिंग. देन आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और ENWR अकाउंट होना चाहिए.
some of the key terms that comes in commodity derivative trading. These are some of the key terms. Final settlement price. This is the price arrived by taking simple average of the last pool spot prices of last 3 days, like expiry day और उससे पहले 1-2 दिन के prices का average अगर लें तो final settlement price reach हो सकता है. Mark to market margin, it is the difference between the rate of the contract and closing or clearing rate or the previous day's clearing rate. Offset कर सकते हैं liquidation of future contract by entering into opposite of an identical contract. कोई भी future contract किसी ने लिया हुआ है तो that can be offsetted by entering into exact same future contract, identical contract. इसको हम offset बोलेंगे. Staggered delivery है, ये एक provision है जो दिया गया था. It is the period beginning few weeks days prior to the expiry of the contract and ending with expiry, during which sellers and buyers have open position. They submit an intention to give or take delivery. Actually ऐसा होता है कि अगर किसी का इंटेंशन है कि एक्सपायरी से पहले वी कैन हैव द डिलीवरी, गिव और टेक डिलीवरी, तो उसमें हम वो इंटरेस्ट अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो ये एक स्टैगर्ड डिलीवरी मैकेनिज्म हो जाता है कि और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 days प्रायर टू द एक्सपायरी होता है. तो 5 दिन तक, 5 दिन प्रायर एक्सपायरी से शुरू होता है. तो उससे 5 दिन पहले आप इंटरेस्ट अपना डाल सकते हैं. यू कैन गिव द इंटरेस्ट टू गिव और टेक द डिलीवरी. एंड लास्टली कमोडिटी इंडेक्सेस भी होते हैं, सच एज हमारा जैसे बीएससी एनएससी में भी इक्विटी में इंडेक्सेस होते हैं, सेम वे कमोडिटी में भी इंडेक्सेस होते हैं. मेटल इंडेक्स होते हैं, नॉन मेटल इंडेक्सेस होते हैं. तो नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट डिलीवरी लॉजिक. उसमें 3 चीजें आ जाएंगी आपकी. कंपलसरी डिलीवरी होता है, एक तो अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो देयर इज अ कंपलसरी डिलीवरी. सेकेंडली इज सेलर्स ऑप्शन. There is an option with the seller, just like I told you, staggered delivery में he can express the option कि he has to give or take the delivery. Then intention matchmaking, until unless there is an intention of the seller, the matchmaking doesn't take place. There is an intention matchmaking. If the intention of the seller is there to delivery, then the matchmaking takes place. These are some of the differences between equity and commodity market. Underlying standardized है as per exchange specification as expiry date. Equity में perpetual है, standardized दोनों है. Underlying market fragmented है, तो price opacity होता है. Equity में price known होता है और real time basis पे. Underlying supply estimate uncertain रहता है क्योंकि वो change हो सकता है. Here certain it is certain and available in public domain. Participants में traders, brokers, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगे. इसमें रिटेल और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स हैं. सेटलमेंट फिजिकली होता है, यहाँ डीमैट सेटल्ड होता है. प्राइस सेंसिटिविटी इसका थोड़ा हाई है बिकॉज सम ऑफ द कमोडिटी दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज और any government policy comes time to time. Here it is medium sensitivity and it is sophisticated level of participation low रहेगा. But here it is a mature participation because market अभी नया है, commodity market is new. However, equity market has been there for a very very long time. I think with time it will get mature enough. So these are some of the stock exchanges which are offering commodity derivative trading. So firstly, if I talk about it is NCDEX, madam hai. NCDEX is a big commodity exchange. Some of the types of commodities that are traded at NCDEX will be bullion, gold, silver, base metals में aluminium, brass, zinc, lead, nickel, copper. Energy में अगर मैं जाऊँ तो crude oil, natural gas is there. Agri में black pepper, cardamom, castor seeds, cotton, crude oil, palm oil, mentha oil. All these are being traded in multi-commodity exchange. After that, national multi-commodity exchange, national commodity exchange, both we have talked about. Then BSC is also into commodity, NSE is also into commodity,
and lastly ICAX is there. So these are some of the commodities being traded in stock exchange. If I talk about agri commodity, there is barley, castor seed, chana, cheese, cotton, oil cake, coriander, guar seed. This is the wholesome list ki how many commodities in agri are being traded. This is some of the exhaustive list. नॉन एग्री कमोडिटी में बात करूं तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, निकल, एल्यूमिनियम, ब्रास, लेड, स्टील, डायमंड, Brent crude oil, Oman crude oil, natural gas. These are some of the examples. Now, moving forward, there are some of the misconceptions about trading in commodity derivative market. First misconception, if I talk about, is dominated by speculator and just like gambling. No, it is not. Commodity derivative market is not about just speculating and gambling. कभी भी नहीं. Commodity derivative उल्टा है. It is opposite to it. ये आपको safeguard देता है प्राइस फॉल से, आपका प्राइस प्रॉब्लम से आपको एक safeguard देता है. Many are whoever trading in commodity derivative market are mostly hedgers who hedge their price against future falls in prices or future rise in prices. So it is not that speculating and gambling, it is a misconception. Then it is another misconception, it is prone to manipulations. No, it is not prone to manipulation. You cannot manipulate the prices in commodity because एक तो price discovery रहता है, real time आपके पास prices पहुंचते रहते हैं. It cannot be manipulated, and moreover it is real thing. It is already prices, we know what commodity prices is going on in contract specifications, the prices are being mentioned, so it cannot be manipulated. No assurance for quality of delivery. No, actually it is not. Another misconceptions that people have about this. Assurance of quality is very much there in commodity derivative market. There quality assess, testing labs, in contract specification also specifically mentioned about the quality of the delivery. So it is another misconceptions that people have about it. Assurance नहीं है, बिल्कुल assurance है. Lastly, suitable only for large traders and investors. No, it is suitable not only for large traders and investors, it is suitable for farmers at farmer level, at trader level, small trader also, they are also into commodity derivative market. So it is a big misconception. So these are the some misconceptions that I've talked about. This is the composition of commodity derivative market ecosystem. Firstly, hedgers are there. If that I've already talked about, hedgers के बारे में मैंने अभी बात की थी. तो उसमें हमारे फार्मर्स है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, processors हैं, importers and exporters are there. Then financial investors are there, day traders are there, position trader, the one who takes the positions, they are also there. Market makers are there. Then the arbitrators are there. These are one of the players or one of the community, I will say, in commodity derivative, simultaneously buy and sell in two markets to earn profit by exploiting the price difference between the two markets. ये हमारे arbitrators हैं. Then broker and trading member, so they can trade, his or own account खोल के trade कर सकते हैं, or for clients also. Now moving forward, who are the additional stakeholders? These are some of the additional stakeholders in market. Clearing corporation is there. After कोई भी trade होता है, then it must be cleared and settled. For that, our clearing corporations are there. Exchanges के भी clearing corporations हैं, वो भी करते हैं. Then warehouse services providers are there. The commodity where it should be kept, the service providers, the warehouses, they are one of the key players. Then warehouse development and regulatory authority, they regulate the warehousing, how the warehousing should take place, what is the quality in warehouse, testing and all that. Quality assessors है, testing labs है, जो commodity test करते हैं.
क्वालिटी ठीक रहेगी कि नहीं उनकी, for that. And then price pooling agencies for arriving at the price. There are various agencies who polls the price at various days and arrive at the price. Then farmer producer organization hai. This is the farmer organization of farmers. Like basically बहुत सारे farmer मिलके एक farmer producer organization का part है through which they trade into commodity derivative market. This was a big step, and this is actually very good for farmers because collectively they can have a good knowledge and have a good experience in trading. So these are some of the benefits of commodity derivative trading. If I talk about the various benefits, first of all is price discovery. जैसे मैंने बोला था कि price discover होता है, price always you can have the discovery of prices, what are the prices going on in the market on real time basis. Then price risk mitigation is there. Wherever you feel that price is going to rise or fall, you can definitely safeguard yourself against price risk mitigation by taking any product like futures है, वो product लेके आप अपना commodity का price आगे चल के secure कर सकते हैं. Then elimination of counterparty credit risk. तो यहाँ पे credit risk will not be there because exchanges are there. There is a standardized trading platform in which trading is taking place. So counterparty risk is not there. Access to all type of market participants. All type of market participants will be there, which you can have an access. There will be traders, brokers. Like I talked about different players who are there in the commodity derivative trading. All are there. You can have the access to all type of participants. Products are standardized. Like I said, हमारा contract specification आगे मैं बताऊंगा contract specification में what all are there. So we have that standardization in the product. The products are standardized across. Then transparent trading platform हो जाएगा. जैसा मैंने बोला था कि nothing is hidden, everything is transparent. The trading platform, the exchanges on which the trading is taking place, it is transparent. So these are some of the key benefits of commodity derivative market. Moving forward, जैसा मैंने बोला था price discovery कैसे ये help करता है आप लोगों का. Receiving price alerts through SMS. Price alerts जब भी होते हैं तो you can directly receive it on SMS. तो it enhances your bargaining power. आपके पास जो bargain करने का power है prices के ऊपर तो वो बढ़ जाता है. पहले जैसे होता था bargain नहीं कर पाते थे, जो price बताया जाता था वो हो जाता, लेकिन अभी आपको alerts आते रहते हैं SMS में, तो it gives you the power, the enhance your power of bargaining. Then it facilitated to reduce the dominance of commission agent. पहले जैसे commission agent middleman होते थे बीच में, तो अभी because of commodity derivative market it is totally mitigated. It is not there. So it is a great benefit to the farmers. Then price risk management, as you can see, सबसे पहले since I have logged my prices, I do not have to worry. This is the farmer number 1 he's talking about. Second image you can see, oh god, I wish I had logged the price. So you can actually log the prices in whatever, if you feel that it is, or you know that it is going to fall or climate is going to change, it will be affected, then you can log the price. Like price falls during harvesting होता है, कभी price fall हो जाता है, तो if you log, then it will be beneficial. And here, as he has logged, he is happy. So here is how you can do the price risk management. Now this is the suitability criteria of commodity derivative trading. There are various fundamental: size or volume of the market, homogeneity, standardization, then durability, उसका storage कैसा है, durability कैसा है, trade factors are there, global trade factors are there, value chain is there, geographical coverage is also there, then ease of doing business, price control आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, applicability, अगर other laws जैसे मैंने बोला था गवर्नमेंट का टाइम टू टाइम होता है, देन वो भी आता है. रिस्क मैनेजमेंट में इंटरनेशनल मार्केट से कोरिलेटेड होता है, सीजनैलिटी होता है, अलग अलग सीजन के हिसाब से
रिस्क आप मैनेज कर सकते हैं. देन प्राइस वोलेटिलिटी इज ऑल्सो देयर. नाउ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, जैसे कि मैंने बात किया था, these are the some of the key features of contract specification. basis center, आपके basis variety, tenderable variety, fixed size एक होता है, हम minimum size, delivery, trading unit, delivery unit क्या होगा, timing of commencement of trading, quality parameters क्या क्या होंगे, delivery specification, whether it is staggered होगा with compulsory delivery और cash settle होगा, maturity due date आएगा. Then risk parameters will be there, limit on open position, daily limit कितना रहेगा, price fluctuation, final settlement price कितना रहेगा, margins कितना रहेंगे, extreme loss उसमें कितना रहेगा, initial जैसे एक दिन देना होता है starting में, that initial margin what will be that. These are some of the key features. आपको contract specification में all of these parameters, all of these trade and risk parameters will be mentioned in the contract specification. These are some of the types of commodity derivative product. Future contract, standardized contract deriving value from the underlying commodity in the spot market. Spot market से ये price derive करता है, and it is a future contract. Future में किसी भी particular date पे किसी भी date पे आप ले सकते हैं ये product, and you can hedge your price. Option contract, here the contractual, it is actually basically a right, not obligation, to buy, that is the call option, or to sell, that is the put option. ये दो तरीके के होते हैं इसमें, ऑप्शन कॉल एंड पुट ऑप्शन ऑफ अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी एट अ स्ट्राइक प्राइस. एक प्राइस पहले आपका अपफ्रंट देना होता है, देन यू हैव दैट राइट टू बाय. कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, पुट और सेल, डिपेंडिंग आपको कैसा चाहिए. An option contract held up to maturity diverges into commodity future position. अगर maturity तक चला गया, like here, since to the maturity date, you have that option to आप बुला सकते, call कर सकते हैं, और you can sell it, buy or sell it. But अगर once maturity पहुंच जाता है, then it is the same as future contract. So option contract may have only been allowed in goods or underlying in the future contract which are already being traded in the exchange platform. जो भी exchanges के platform में trade हो रहा है, सिर्फ उसी में ही option अभी allow किया गया है. Now warehousing, if I talk about, physical delivery is mandatory for all the contracts unless specified otherwise. आपका physical delivery mandatory है. Warehousing service provider, these are some of the functions that warehouse servicing provider provide. Stocking of goods, maintaining their value intact, facilitating good delivery, अच्छे से delivery करना है. Warehouse must be registered. It must be registered with Warehousing Development Authority, regulatory authority हमारे वो, it must be registered, उनके साथ registered होने चाहिए. WSP empanelment with clearing corporation. So these are some of the features of the warehousing. Now how the goods are being deposited in the warehouse. Seller है, aggregation of goods and sorting as per contract specification जो भी रहेगा, whatever is mentioned in the contract specification, aggregation takes place. Then online booking of warehouse takes place. Warehouse space जहाँ पे रहेगा, there it is booked online. Online booking takes place. Then transport is arranged. Goods are being deposited. Whatever exchange approved warehouse is there, there it is the goods are being deposited. Then quality testing and certification by assayer. Assayer जैसे मैंने बोला था, they test for the quality of goods. Labs are also there. They test and provide a certification, quality testing certificate, that quality ठीक है कि नहीं उसका. After finally generation of receipt takes place, warehouse receipt होता है and finally goes to commodity exchange. Now this is the clearing and settlement. The main function, the clearing corporation, it is actually counter, it acts as a party and counterparty, both buyer and seller. Main function will be buyer and seller. It acts as both buyer and seller. जब कोई ले रहा है तो उसके लिए buyer बन जाएगा, तो कोई बेच रहा है तो it will be seller for them, to avoid counterparty defaults and guarantees the performance of the contract.
तो कोई भी काउंटर पार्टी डिफॉल्ट एंड आपके पर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस जैसा कि स्पेसिफिकेशन है मेंशन वैसा होना चाहिए, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन takes care of that. MCXCL is one of the clearing corporation, and entities involved will be clearing corporation. Clearing members are there who are under clearing corporation. Banks will be there, who will be clearing the whatever amount, whatever trade has been taking place, banks clear, and finally the repositories, those who collect the warehouse receipt. Now the settlement process, if I talk about, there are two types. कैश एंड फ्यूचर होते हैं, दूसरा प्रोडक्ट ऑप्शन होता है. कैश एंड फ्यूचर में इट विल बी द प्राइस डिफरेंस. तो व्हाट विल बी द प्राइस डिफरेंस एट द डेट मैच्योरिटी, वो आपका प्राइस डिफरेंस दैट विल बी सेटल्ड इन कैश. एंड ऑप्शन में इट विल बी प्रीमियम सेटलमेंट. ऑप्शन में देयर इज एन ऑब्लिगेशन, यू कैन बाय और सेल, तो यू पे अपफ्रंट अमाउंट, दैट इज द प्रीमियम. द प्रीमियम सेटलमेंट होता है. कैश एंड फ्यूचर में delivery settlement of the underlying commodity, seller to deliver, buyer to receive. And option on exercise only, option contracts will be settled to delivery of goods, only on exercise only. Fund settlement system for delivery, buyers to pay, seller to receive. It is the fund settlement delivery. Some of the recent initiatives that has been taken by SEBI, if I talk about, SEBI ने बहुत सारे लिए हैं initiatives for developing commodity market. First of all, it permitted the option contract on commodity future. पहले नहीं था. बाद में we have allowed option contract only for those for those goods which have been traded on exchange. Then implemented risk management norms same as equity derivative. जो भी equity derivative में हमारे रहते हैं उस सेम हमने इस commodity derivative market में भी लागू किए हैं. After that, revised warehousing norms also. We have revised various warehousing norms for commodity derivative segment. We have integrated commodity and equity broking activities. We have prescribed cyber security norms also. Permitted futures and commodity indices. Permitted options in goods. Staggered delivery period, जैसे कि मैंने बोला था, that was earlier 10 days. Now it is 5 days. We have permitted various other players, mutual fund, category 3 AIFs, portfolio managers also in commodity market. Alignment हुआ है trading lot and delivery lot का. So these are some of the initiatives. And if I take some other major initiative, right now, Investor Protection Fund is being created to protect and safeguard the interest of investors, clients in respect of legitimate claims arising out of default of the member of the exchange. कोई भी member अगर default कर रहा है, उसमें कुछ आपके claim हो रहे हैं, किसी के साथ problem हुआ है, तो those claims that has been taken care by Investor Protection Fund. Investor Protection Fund is specifically created to cater to those claims. So, and also Investor Services Fund is there for providing basic facilities to Investor Services Center set up by Stock Exchange. So Stock Exchange के various Investor Services Center हैं to provide and facilitate basic infrastructure. So the Investor Services Funds and also been created. So these are some of the other initiatives. जैसे कि मैंने पहले बात किया for regarding scores. When you have a grievance, तब आप पहले intermediary और exchange के पास जाएंगे. If the complainant आप satisfied नहीं है, if you're not satisfied with the resolution as provided by the exchange, then you can definitely lodge your complaint in digital form. We have that scores redressal system where you can definitely lodge the complaint. So it was launched on 2011, 8th of June. This is the website link, scores.gov.in. यहाँ पे फाइल कर सकते हैं. You can also track the complaint. So as a new user, you have to first register yourself, basic detail, PAN and all. And after that, log in. You can log in and you can lodge your complaint. So these are some of the do's and don'ts. I'm very sorry for the PPTs, some problem is there.
I'll just be talking about do's and don'ts. This is our safe investing. How can you can be safely investing in commodity derivative market? These are some of the do's. Trade only through SEBI registered member. Don't trade to unregistered entities. Only through SEBI registered member you trade. Insist on रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट. ऑलवेज आप अपना रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट देखिए, उसमें क्या क्या है, रिस्क हो सकते हैं, उसको क्या क्या ऑब्लिगेशन है, वो सब आप चेक करिए ठीक से. ऑलवेज बी कंप्लाइंट विद केवाईसी नॉर्म्स. दो रिसेंट केवाईसी नॉर्म्स है, ऑलवेज उसका कंप्लायंस ध्यान में रख के चलना है आप लोगों को. ऑलवेज कोट योर यूनिक क्लाइंट कोड. देयर इज अ यूनिक क्लाइंट कोड. व्हेनेवर आपको खोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट तो एक यूनिक क्लाइंट कोड बन जाता है. ऑलवेज वो यूनिक क्लाइंट कोड अपने पास रखिए और उसको हमेशा कोट करिए जब भी जरूरत है. इंसिस्ट ब्रोकर टू प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्ट नोट फॉर एवरी सेटलमेंट एंड कंप्लीट डिटेल. तो ब्रोकर क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट देना ही है, तो ऑलवेज आप इंसिस्ट करिए. अगर नहीं मिला आपको, ऐसा तो ब्रोकर देते हैं, अगर आपको नहीं देता कोई ब्रोकर तो ऑलवेज इंसिस्ट अपॉन दैट कॉन्ट्रैक्ट नोट. क्रॉस चेक करिए आपका ट्रेड जेन्युइननेस, आपका ट्रेड सही है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं. तो ट्रेड वेरिफिकेशन फैसिलिटी होता है. डोंट्स, सॉरी आपको ये दिखेगा नहीं. डोंट्स इफ आई टॉक अबाउट, डू नॉट गेट कैरिड अवे बाय अल्यूरिंग एडवर्टीजमेंट. जैसे कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, पैसा डबल हो जाएगा या इतने में आप लेंगे, आपको कुछ महीने में इतना पैसा आपको बढ़ के आएगा. ऐसा नहीं है. प्लीज डोंट गेट कैरिड अवे. ऑल दिस आर टिप्स एंड ऑलवेज सभी वेबसाइट देखिए, एक्सचेंज के वेबसाइट देखिए, न्यूज़पेपर्स देखिए, जो जेन्युइन चीजें हैं जहाँ पे यू गेट द राइट इंफॉर्मेशन. ऑलवेज चेक फॉर दैट. डू नॉट एक्सेप्ट अंडरसाइंड और डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट. कभी भी अनसाइंड और डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट पे मत निर्भर रहिए. डू नॉट लेट रिस्क अगेंस्ट पोजीशंस एक्यूमुलेट बियॉन्ड योर कैपेसिटी टू बेयर. देखिए जितना आप पे कैपेसिटी है, वॉट एवर योर कैपेसिटी इज, ओनली बेयर टू दैट एक्सटेंट ट्रेड करिए. नेवर नेवर go beyond the capacity, because if loss happens then it will only hurt you. तो बेटर है कि जितना आप बेयर कर सकते हैं सेफली उतना आप अपना पोजीशन लीजिए. डू नॉट मिस कीपिंग ट्रैक ऑफ योर फाइनेंशियल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस. आपने जो भी पोजीशन लिए हैं उसका जो भी ऑब्लिगेशंस बन रहा है, जितना आपको लेना है देना है फाइनेंशियल, उसको हमेशा मॉनिटर करते रहिए कि कितना है, कितना देना रहेगा, कितना लेना होगा, आपको कितना मिलेगा. तो ऑलवेज कीप ट्रैक ऑफ योर दैट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन. डू नॉट नेग्लेक्ट टू सेट आउट इन राइटिंग ऑर्डर्स फॉर हायर वैल्यू गिवन ओवर फोन. जब भी आप फोन पे ऑर्डर प्लेस करें हायर वैल्यू का, ऑलवेज उसको ट्रैक रखिए, उसको रिटर्न में रखिए कि इतना आपने किया है प्लेस. तो do not pay brokerage in excess of that rates prescribed by the exchange. Exchange ने जो rate prescribe किया है, there always be there on the contract. तो always pay that rate only. कभी भी उससे ज्यादा कोई भी excess मांग रहे, never pay that. So these are some of the do's and don'ts. और मैं बात करूंगा तो रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल आईडी है स्टॉक ब्रोकर के साथ, हमेशा वो करिए, रजिस्टर करिए अपना जो भी आपका करेक्ट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है. आपका अकाउंट पे चेक डिमांड रेट हमेशा ब्रोकर के नाम पे. इंसिस्ट ऑन पीरियडिकल सेटलमेंट. हमेशा पीरियडिकल सेटलमेंट के लिए इंसिस्ट करिए. डब्बा ट्रेडिंग से हमेशा दूर रहिए. गेट डिटेल्स ऑफ ब्रोकरेज फीस, अदर चार्जेस लेविड बाय मेंबर. जो भी आपके चार्जेस लगा रहे हैं ब्रोकर, ऑलवेज कीप अ ट्रैक ऑफ दैट. उनका डिटेल लीजिए, क्या क्या चार्जेस आपके ऊपर लगाए गए हैं. तो ऑलवेज उनसे चार्जेस लेते रहिए, पूरे डिटेल्स लेते रहिए. डोंट्स में अगर मैं बात करूं, डू नॉट एंटर इनटू अश्योर्ड रिटर्न्स अरेंजमेंट बाय विथ एनी मेंबर. कोई भी अश्योर्ड अगर बोल रहा है तो उसमें एंटर मत करिए, बिकॉज नथिंग इज अश्योर्ड. because changes, because it is trading, there is some element of risk involved. तो assured में मत जाइए कभी भी. Do not forget to take note of risk involved in trading. कितना क्या रिस्क है, ऑलवेज कीप इन माइंड कि मैं इतना रिस्क ले रही हूँ. तो ऑलवेज कीप अ नोट ऑफ दैट. डू नॉट डिले और पेमेंट डिलीवरीज ऑफ कमोडिटी टू द मेंबर.
कभी भी पेमेंट डिले और उसमें डिलीवरी नहीं तो पेनल्टी लगने के चांसेस है, तो keep that in mind please. Don't issue checks in the name of authorized person के नेम पे कभी भी चेक इशू मत करिए. It is another big don't. अदर इनिशिएटिव एक्टिविटी अगर मैं बताऊं तो स्कोर्स तो मैंने इसके बारे में बात की थी. ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था सभी का. तो दिस आप देख सकते हैं यहाँ पे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर इज देयर 1800266757. whatever problem is there, or if you're not able to understand anything, you can just dial this toll free number and आप पूछ सकते हैं कि whatever problem you're facing, or if you're unsatisfied with the complaint, कोई भी कंप्लेंट है अगर वो चल रहा है उसका आपको रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा स्कोर्स पे भी, तो आप नंबर डायल करके आप पूछ सकते हैं. देन whoever officer is handling or whichever department is handling, they will be providing you क्या solution है, क्या update है उस complaint में. So this is the score system. Now information help desk है हमारे सभी का, वेबसाइट है sebi.gov.in है, इन्वेस्टर वेबसाइट भी है investor.sebi.gov.in. these are both are only to cater to the investors, आप लोगों के लिए बनाए गए हैं. You can definitely visit and have all the information about trading. And this will be all. Thank you all. My presentation will be over. Thank you for listening. Whatever questions you are having, you can please ask. Thank you, sir. Thank you for such a detailed presentation. Now I request all the participants, if you have any query that was related to the content that was presented by sir, so please put forth the question in the chat box. मैं निवेदन करती हूँ सारे पार्टिसिपेंट से, अगर उनका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो चैट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपको आपके क्वेश्चन को आंसर कर पाए. Sir, I don't see any question in the chat box. Yes, ma'am, I can see that. Yes, sir. So going forward, I would like to thank everyone for attending this session, especially during the market hours. And I would also like to thank Ajay sir for taking out his valuable time and giving all our attendees such an informative session. Thank you, sir, and thank you, everyone. Thank you so much, ma'am. I think ma'am अभिनव दुबे जी हैं, उनका एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में. सर उन्होंने अपना ईमेल आईडी एंड फोन नंबर शेयर किया है. जी जी. एंड उन्होंने शायद अपने किसान प्रोड्यूसर कंपनी एफपीसी का भी नंबर शेयर किया है सर, बट उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है. तो अनुभव Okay. सर, इफ यू हैव एनी क्वेरी, आप डेफिनेटली कभी भी पूछ सकते हैं एक्सचेंज से, सेबी से. जी सर. ठीक है, तो वी कैन स्टॉप हियर मैम. सर एक क्वेश्चन आ गया है सचिन जी का. जी जी जी. उनकी क्वेरी है कि हाउ कैन फार्मर लॉक देयर प्राइस. फार्मर लॉक देयर प्राइस. सचिन जी, जैसे कि मैंने बोला था, मैंने पहले एक समझाया था, hedging is a method by which we can lock the price. जैसे कि एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मैंने सम प्रोडक्ट्स के बारे में जब बताया था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है. तो फ्यूचर में इफ यू फील दैट प्राइस आपका बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, तो हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि फ्यूचर डेट पे अब मैच्योर होगा. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि एक महीने बाद आपको लग रहा है कि फ्यूचर प्राइस कम होने वाला है या बढ़ने वाला है, तो आप उस हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, जिसमें भी आपका जो प्राइस है वो फ्यूचर में वही रहेगा जो आप चाहते हैं.
तो उस हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, वो आप ले सकते हैं। एंड यू कैन डेफिनेटली लॉक योर प्राइस। आप प्राइस लॉक कर सकते हैं जिससे कि आप प्राइस रिस्क मैनेज कर सकते हैं बेटर तरीके से। तो हेजिंग है ये। तो ये मैंने बताया था पहले। तो ये एक तरीका है जिससे आप कर सकते हैं। जी सर, so I guess अब कोई क्वेश्चन नहीं है, जी so मैम। we would like to end the entire presentation now. थैंक यू जी। सर। एंड NCDX आपके लिए, आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए, सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशन हर महीने लाता रहेगा। तो वी एक्सपेक्ट कि आप पार्टिसिपेशन इसमें दिखाएं ताकि कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ती रहे। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम। Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye.